Welcome back to the physics class. So in the previous lecture we have started the ray optics. Okay, what we have discussed what is refraction of light, and in another video that was the topic total internal reflection. So what was the condition of total internal reflection? That if object is in denser medium. What is the denser medium? Whose refractive index is more than the other medium, in which the medium speed of light is lesser to the another medium, that is called denser medium. If the object is in denser medium and angle of incidence is greater than critical angle. Every surface has its own critical angle. If angle of incidence in the denser medium is more than the critical angle, then the total internal reflection take place in light going from denser to rarer but reflects in the same medium, in the denser medium. That was total internal reflection. So today we are starting spherical refracting surfaces. The topic we are going to start is spherical refracting surfaces. So we are starting with the topic total internal reflection in the previous lecture. So today we are going to start with spherical refracting surfaces. The topic we are going to start is spherical refracting surfaces. Spherical refracting surfaces. So what is spherical refracting surfaces? Okay, it means the refraction taking place at a surface and that surface is spherical. It means curved. A refracting surface which is a part of transparent sphere. आप एक suppose you have a sphere of transparent glass का, कांच का बना हुआ एक sphere है. That sphere उसका एक कोई भी part that is refracting the light. It refracting means transparent medium in which refraction of light take place. That surface is curved. Suppose this is a surface. This is transparent. Light is coming from this medium and entering to this medium. Path of light changes. So this is plane refracting surface because this surface was plane. But now we are discussing spherical refracting surfaces. It means refraction of light taking place and the surface is curved. So there are two types of spherical refracting surfaces. First one is convex. Convex refracting surface. Convex refracting surface. First is convex refracting surface. Refracting surface है and that is convex. Convex shape में है. Okay. Now what is next? What is the shape of this? इसकी हम shape discuss करते हैं. What is called convex refracting surface? Whose convex surface is towards the rarer medium. Suppose we have this. Okay, this is the surface, refracting surface. This is a transparent curved surface. This is the convex part, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ part होता है, निकला हुआ part होता है. That is called convex means outgrowth part. जो part उसका बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, that is convex part. Convex part की तरफ if there is rarer medium and that part is bent in, that is denser medium. Okay. Whose refractive index is mu1, whose refractive index is mu2, mu1 is less than mu2, whose refractive index is less than, that is rarer medium, whose refractive index is more, that is called denser medium. जिसका जो बाहर उभरा हुआ पार्ट होता है उसके तरफ अगर rarer medium हो, that is called convex refracting surface. What is it called? That is convex refracting surface. Next we are discussing this is convex refracting surface. Now next is concave refracting surface. Second type of surface is concave refracting surface. Concave refracting surface. Shape is concave. Reverse from the convex whose bent in part. It means this is the bent in part जो अंदर की तरफ दबा हुआ, this is bent out part. Whose bent inside is towards the rarer medium. Whose bent inside is towards the rarer medium. If surface is like this, this is the rarer medium whose refractive index is mu1, this is denser medium whose refractive index is mu2. So this is the
bent in part. Okay, bent in part is to a rarer medium, that is concave. Bent out part is to a rarer medium, that is called convex refracting surfaces. Convex and concave, two refracting surfaces are there. So some of the important terms are there which is attached to the, which is belonging to the spherical refracting surfaces. Let us discuss. First is pole. The midpoint of spherical surface, this is the spherical surface, this midpoint of this is called pole, represented by P. Represented by P. Refracting surface का जो midpoint है, that is called pole and represented by P. Center of curvature. What is center of curvature? It means this is a curved part. This is a curved part of a transparent sphere. अगर हम इसको complete कर दें तो कहीं ना कहीं एक sphere बनेगा, उसी का एक curved part है ये. एक sphere बनेगा, उस sphere का एक curved part है, ये कुछ part है. Now center of that sphere, center of that sphere is called center of curvature. Center of that sphere is called center of curvature, and distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. If we are discussing the concave refracting surface, center is C, so this distance is called radius of curvature, this point is center of curvature. क्योंकि एक sphere complete होगा, sphere का एक curved part है, that is refracting surface. The center of that sphere whose this part is a concave refracting part, that is called center of that sphere is called center of a curvature. Okay, and distance between pole and center of curvature is called radius of a curvature. What is principal axis? If we are extending the line that is passing from P and C on both the sides, this is called principal axis. This is called principal axis. The axis which is passing from pole and center of curvature and extended on the both the sides, that is called principal axis. Okay. Next is aperture. The diameter of this is called aperture. X, Y. जितना इसका height होता है, size है, size of the refracting surface is called its aperture. What is it called? It's aperture. So there are two types of refracting surfaces. Now we are discussing how they refract the light, means how the curved surfaces of spherical surfaces refract the light. We are discussing refraction at spherical surfaces, starting with the refraction at convex surface. So we are starting with refraction at convex surface. How light refracts at the convex surface. Convex surface पे light कैसे refract होती है? Let us discuss. Convex surface can form two types of images. First is real image, second is called virtual image. So we are starting with the real image case. When convex spherical surface forms a real image. Okay. So first part of this is real image. Real image कैसे form करेगा एक spherical surface, convex spherical surface? Let us discuss. For this, first of all, draw a convex spherical surface. This is the convex spherical surface of, this is called X, Y. This is center of curvature and center of this is called pole. Center of this is called pole. After this, extended on both sides, it will be, this is called principal axis. What is it called? That is principal axis. Now we are taking an object. If we are discussing the refraction of light by a spherical surface, we have to take a point object. It means we have to draw the object in the form of a point on principal axis. Always the object is placed on principal axis. In class 10th already we have discussed. So we are taking an object O on principal axis. Okay, O is the object on principal axis. Object is giving the rays of light. First ray is going to pole. It means जो pole से जाती है, that always passes through straight. वो जो सेंटर कर्वेचर से जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाती है, तो इट मीन सेंटर कर्वेचर में से भी जा रही है, पोल में से जा रही है, तो इट विल पास थ्रू, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएगी दैट विल पास स्ट्रेट थ्रू, वो स्ट्रेट निकल जाएगी उसमें से. आफ्टर दिस an object can emit a number of rays of light. Number of rays of light, this is the first ray.
and another it is emitting a ray of light at some angle, emitting light at some angle to the principal axis. That angle is called alpha. It means that incident ray is making with the principal axis, that is called alpha. Now this is, as we know, this is convex surface, this is rarer medium, and this is denser medium. If ray is going from rarer to denser medium, it will always bend towards the normal. It will always bend towards the normal. हमेशा normal की तरफ bend होंगे. Then what is the normal in this case? In the convex spherical surface, in the spherical surfaces even, if you have to draw the normal, join the point at which you have to draw the normal. Here we have to draw the normal. This point is A. So join that point with the center of curvature. Join that point with center of curvature. This is called normal. In the spherical surfaces, if you have to draw the normal, join that point with center of curvature. If you are joining that point to the center of curvature, it means that is called normal. This is the normal, and light is going from rarer to denser medium, so light will bend from towards the normal. Towards the normal, it means it will bend downwards. It will bend downwards. स्ट्रेट जाने के बजाय ये डाउनवर्ड बेंड होके और प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं जाके ये मीट करेगी. दिस इज रिफ्लेक्टिंग रे. दिस इज कॉल्ड ए आई. दिस इज आई बना यहाँ पे, दैट इज इमेज. एंड वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट देयर. सो इमेज इज फॉर्म्ड एट आई. ओ ऑब्जेक्ट की इमेज, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे, एक रे इधर से आ रही थी, एक रे इधर से आ रही है. सो टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स एट दिस पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड इमेज. यहाँ इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की. सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. दिस इज द अल्फा एंगल making incident ray with the principal axis. If refracting ray is making an angle with the principal axis, that is called beta. This angle is called beta because refracting ray is making an angle with the principal axis, and normal is making an angle with the principal axis, that is called gamma. The angle which incident ray makes with the principal axis, that is alpha. Refracting ray meets with the making with the principal axis, that is beta, and normal with the principal axis, that is called gamma. Three angles are there, and another angle of incidence and angle of refraction are also there. What is the angle of incidence? Angle between normal and incident ray. Angle between normal and incident ray is called angle of incidence. So this is the incident ray, this is normal, so this is the angle of incidence. This is the normal, this is refracted ray. ये जो small angle यहाँ पे, this is called angle of refraction. This is called angle of refraction because this is the normal, this is refracted ray. Refracted ray makes an angle with the normal, that is called angle of refraction. That angle is called angle of refraction. Okay, so there are 5 angles, 3 incident ray, normal, refracted ray making with the principal axis alpha, beta, gamma, and 2 angles the incident ray makes with the normal and refracted ray makes with the normal, that is I and R. Angle of incidence and angle of refractions. Okay, and image is real because image is formed on other side. In the refraction, image formed on other side is called real image, and image formed on the same side is called virtual image. So now I am taking a triangle of object with center of curvature. If we are taking a triangle that is AOC, what the triangle is AOC, ट्रायंगल AOC. हमें पता क्या चलेगा अभी कौन से हमने ट्रायंगल लेनी है वो देख लेते हैं हम. देखिए ऑब्जेक्ट की पहले A, ऑब्जेक्ट की C के साथ, फिर I की AC के साथ. ओके, ऑब्जेक्ट OAC ट्रायंगल बनी. इन दिस ट्रायंगल I इज एक्सटीरियर एंगल. लुक एट दिस. मैं नॉर्मल को भी थोड़ा डार्क ही कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए आसानी से, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉर्मल. जो सेंटर कर्वेचर के साथ मिल रहा है that is normal. So look at this, triangle is OAC, I is the exterior angle. As we know, exterior angle is equal to sum of 2 opposite interior angles. Exterior angle of triangle is the sum of 2 opposite interior angles. To opposite exterior angle is I, sum of 2 opposite interior क्या बनेगा? अल्फा प्लस गामा. क्योंकि इसका एक तो इंटीरियर ये बना, एक इंटीरियर ये, एक अपोजिट इंटीरियर होते हैं उसको छोड़ के बाकी दोनों. So I is equal to alpha plus gamma. So this is equation 1. Okay.
Now in triangle IAC, in triangle IAC, मतलब AIC, triangle AIC, triangle AIC, in this triangle gamma is exterior angle, gamma is out of this, gamma exterior, it means gamma equals R plus beta. To opposite interior, two opposite interiors बनेंगे R plus beta, so gamma is equal to R plus beta. This is equation number 2. What is this? This is equation number 2, but this is not the proper equation, so we have to calculate the value of R. So what will be the value of R? R को मैं उधर वाला इधर लिख दिया, that will be gamma minus beta. So equation number 2 is R equals gamma minus beta. So we have two equations now, one in the value of I, another having the value of R. Now using Snell's law, what we are doing, using Snell's law, using Snell's law. Snell's law, what is the Snell's law? That is mu to 1. Refractness of second with respect to first, that is sin I upon sin R. Sin I upon sin R. Mu to 1 can also be written as mu 2 by mu 1 is equal to sin I by sin R. Mu 2 1, it means refractant index of second with respect to first can also be written as sin I by sin R. So putting the value of I, if angle is small, then sin theta is equal to theta. If angle is small, sin theta is equal to theta, मतलब जितना sin theta को उतना theta की जो वैल्यू होगी वही बनेगा. Now here angles are small, यहाँ एंगल जो बनते हैं दिखाए मैंने बड़े हैं लेकिन small ही बनते हैं बहुत. If angles are small, sin theta is equal to theta, it means sin I is equal to I, then sin R is equal to also R. So sin I can be written as I, R can be written as sin R can be written as R, because I and R are small angles. When angles are small, sin theta is equal to theta. जो sin theta उसको theta लिख सकते हैं. Sin theta तो उसको theta लिख दिया, sin theta theta लिख दिया, I और R. So in this case, what it will be, that is mu 1 I equals mu 2 R. Cross multiplying this, mu 1 I equals mu 2 R. Okay. So mu 1 into I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें. If we are putting the value of I from here, okay, what is the value of I? That is mu 1 I की वैल्यू ये पुट की हमने, that what is alpha plus gamma. What is R? That is gamma minus beta. Okay. When angles are small, theta is also equal to tangent theta. When angles are small, sin theta is equal to theta. Similarly, theta is equal to tangent theta. अगर tangent theta में तो ये theta ही है, angles ही हैं, alpha beta जो gamma है. तो we can also write it as, if angles are small, alpha can be written as, so we were discussing when theta angle is small, theta is equal to tangent theta. So alpha is can be written as tan alpha and gamma can be written as tan gamma, mu 2 tan gamma minus tan beta. Tan alpha plus tan gamma equals mu 2 tan gamma minus tan beta. What we have to do, if angles is small, theta can be written as tan theta. So we have written the theta is equal to tan theta. We are putting the values. If what is tan alpha? What is the formula for calculating tangent value? That is perpendicular by base. Tan is perpendicular by base. So mu 1 here tan alpha. Putting the value of tan alpha from this figure 10, but there is no perpendicular. So what we have to do? We have to draw a perpendicular this, that is AM perpendicular on principal axis. We have drawn a perpendicular that is AM on principal axis. Principal axis पे हमने perpendicular draw कर दिया. So what is this? This is the triangle now. Okay, what is the tangent? Tangent is perpendicular by base. Perpendicular is AM, base is MO. Perpendicular is mu 1 is outside, that is एक इसके बराबर आ रहा है हमारा, that is आओ सर. So putting the values, that is mu 1 outside था हमारा, tan alpha perpendicular by base, AM by MO, AM by MO plus tan gamma. Tan gamma is, this is the triangle ना gamma वाली, perpendicular AM by MC.
ए एम बाय में एम सी इक्वल्स म्यू टू टेन गामा फिर से ये आएगा, दैट इज ए एम बाय में एम सी टेंजेंट बीटा, दिस इज अ ट्रायंगल नाउ बीटा की, ये बड़ी ट्रायंगल बनेगी ए एम बाय में एम आई, ए एम बाय में एम आई. Okay, what we have done, calculating the value of tangent alpha, beta, gamma and put in the value of this equation. If you look at here, am is common both the sides, so it will be cancel out. What will be, that is 1 by mo plus 1 by mc mu 2 multiply कर रहा हूँ, ये क्या बचेगा mu 2 by mc, mu 2 by में mi, so here mu 1 by mo, mu 1 by mc. Okay, taking the value of mc on the same side and other on the another side, so mc की values ये इधर ले आओ, so what will be this, that is mu 1 minus mu 2 by में mc, mc कॉमन निकालिए हमने, ऊपर क्या बचा, that is mu 1 minus mu 2, ये उधर जाएगा या नेगेटिव उधर रख देना, ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे. ओके, तो इसके लिए क्या, आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, ये उधर ले जाओ और वो उधर ले, क्या होता है कि इजी रहे, नेगेटिव में ना रहे, तो म्यू 1 बाय में एमओ प्लस म्यू 2 बाय में एम आई, ये उधर जाएगा, दैट इज म्यू 1 माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय में एम सी, ये उधर चला गया, वो इधर आ गया. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज एज फर्स्ट, बिफोर दिस m is very close to p, as m is very close to p. So if we are calculating the distance from MO, it means that is distance from PO. M P के बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि जो हम इसमें यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका अपार्चर बहुत स्मॉल है. अपार्चर स्मॉल होगा तो उससे क्या है कि MO इज़ वेरी क्लोज टू PO. जो MP के क्लोज है तो जो MO की वैल्यू है वही PO की वैल्यू बनेगी. सो म्यू 1 बाई MO को हम क्या ले सकते हैं, म्यू 1 बाई PO, म्यू 2 बाई MI दैट इज PI, mu 2 minus mu 1 by में PC. तो m is very close to P, so we are all the distances are measured from pole, so m को हमने P से कन्वर्ट कर दिया. Now we are putting the values. What is PO? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है that is represented by U, and this is negative. लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, so this is minus U. PO is minus U, ये mu है ऊपर और नीचे ये minus U बचा, प्लस mu 2 बाय में पी आई, पी से आई, पोल से इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, इमेज का डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी. लेफ्ट हैंड साइड के साइंस नेगेटिव होते हैं, राइट हैंड साइड के साइंस पॉजिटिव होते हैं, तो इमेज इज ऑन राइट हैंड साइड बिकॉज रियल इमेज इज देयर, सो दिस विल बी प्लस वी, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय में पी सी. Okay, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक that is radius of curvature. On the right hand side this is r. What is this? That is r. So this is the equation of refraction of light from rarer to denser medium, from rarer to, ये rarer से denser medium में था और रियल इमेज का था. कॉन्वेक्स सरफेस में rarer to denser रिफ्रैक्शन करने वाला ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम और वो रियल इमेज बनाता है. दिस इज द इक्वेशन फॉर द दिस इज इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर द रियल इमेज. जब रियल इमेज बनेगी और रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो रहा है. ओके, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द केस ऑफ वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज में क्या आएगा, डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बाकी भी यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं चेंजेस आपको बता देता हूँ. सो व्हाट विल बी इन दैट केस, and case is B, that is virtual image. Image is virtual, surface is same, convex, this is pole, this is center of curvature, this is radius of curvature, this is principal axis. Okay, if you want to form the virtual image from the convex reflecting surface, the object is placed very near to the surface. Object is this, air. रियल इमेज बनाने तो ऑब्जेक्ट दूर रखना पड़ता है, अगर वर्चुअल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट
नज़दीक रखना पड़ेगा अपने को. सो फर्स्ट रे इज गोइंग स्ट्रेट, अनदर इज मेकिंग एन एंगल, दिस इज द एंगल अल्फा. इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बना रही दैट इज अल्फा. सो व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल बताया भी था आपको कि अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो यू हैव टू मीट दैट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. किसी पॉइंट पे अगर आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, दैट इज नॉर्मल. व्हाट इज दैट? दैट इज नॉर्मल. सो गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर का ही केस है. पहले रियल इमेज थी, अब वर्चुअल इमेज है टूवर्ड्स द नॉर्मल. बट इस केस में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा बेंड नहीं हो पाती लाइट. सो इट विल बेंड समवट, यहाँ बेंड होगी, ज़्यादा दूर से आएगी तो कम एंगल पे बेंड होना होता है तो कम बेंड हो जाती है ज़्यादा, और जितनी नज़दीक से आएगी वो उतनी कम बेंड होगी. तो जितनी कम बेंड हुई, नाउ वन रे इज गोइंग ऑन दिस डायरेक्शन, अनदर रे इज गोइंग ऑन दिस डायरेक्शन, सो दे विल नॉट मीट ऑन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे वो नहीं मीट करेंगी. सो वी विल एक्सटेंड दैट रिफ्लेक्टेड रे टू द अपोजिट साइड. इसको हम अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट करेंगे. सो इमेज विल बी देयर, मतलब एक्सटेंड कर देंगे वर्चुअली, दैट विल इमेज विल बी हियर. सो दिस इज पी सी. ओके, सो रे इधर जा रही है, एक इधर आएगा, इधर मीट नहीं कर सकते तो बैक डायरेक्शन में अगर आप इसको मीट करोगे दैट विल बी आई, दैट विल बी इमेज. ओके, सो इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. सो एंगल लेते हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, अपोजिट डॉट लगाई क्योंकि वर्चुअल है. इट इज मेकिंग एन एंगल प्रिंसिपल विद द बीटा, the normal making an angle with the principal axis, that is gamma. Normal, this is the normal, okay, and this is the incident ray. This complete angle is called I, and this small angle is called normal. This is the normal, and this is a refracting ray. On the other hand side, this is angle R. This angle is also R, this angle is also R. ये भी R ही है वैसे. ओके, तो अब इसमें वही आपने करना है, ट्रायंगल AOC, AOC, इसमें R बनेगा, R इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. R इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ, सो R विल बी, एक मिनट, R नहीं बनेगा इसमें. इसमें अगर हम दूसरे तरीके से देखें I बनेगा इसका, I, ये अगर ये पूरी ट्रायंगल बन रही है देखो ये, तो ये इसका I एक्सटीरियर एंगल बनेगा. I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा ही रहेगा ये, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. बट सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? अब ट्रायंगल लेते हैं AIC, एक ऑब्जेक्ट के साथ लेनी होती है, एक इमेज के साथ लेनी होती है. AIC, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर R बनेगा, R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा. इसमें सीधा ही बन रहा है ये, R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. यहाँ वैल्यू हम पुट करें, जहाँ R की वैल्यू पुट करनी है, ये प्लस हो गया, यहाँ भी ये प्लस हो गया, ये सब कुछ सेम रहेगा. यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा. ओके, जो इधर से टर्म आएगी दैट विल बी माइनस. यहाँ माइनस हो गया तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, माइनस है. अब वैल्यूज पे आते हैं, वैल्यूज रखते हैं. वैल्यूज में क्या हुआ, PO ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में है, दैट इज माइनस यू, ये माइनस यू ही रहेगा. प्लस, या यहाँ माइनस है हमारा फॉर्मूला में, म्यू टू बाय PI, पोल से इमेज का डिस्टेंस. इमेज लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका डिस्टेंस VC लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, सो इट विल बी नेगेटिव V, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. और ये R इधर ही रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज दिस. फॉर्मूला सेम बनेगा जाके, जो रियल इमेज का है वही वर्चुअल इमेज का फॉर्मूला बनेगा. बट डेरिवेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वहाँ गामा माइनस बीटा था, यहाँ बीटा प्लस गामा आ गया. दिस इज द डिफरेंस इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज. डायग्राम इज डिफरेंट एंड जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है. So this was the refraction at convex spherical surfaces. I hope you all understood the today's concept. Till then, thanks and have a nice day.